गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, जय हिंद एंड सत श्री अकाल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक of the paranoia in Pakistan military, the implications and consequences, and we'll be talking and having a discussion on this with Brigadier Arun Sehgal, uh, who's joining us after a long time. Sir, good evening and welcome back to Ghana Shot. We've been missing you here, Thank you, sir. I'm happy to hear that. sir. एंड मैं सबको बताना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर सहगल साहब जो हैं ये यूएसए गए हुए थे, उसके बाद वापस आए, देन ही वेंट ऑन ट्रैक टू थाईलैंड एंड सिंगापुर, एंड he had a guftagoo with Southeast Asian people, and he also had an interaction with the Pakistanis, right, as part of that. So, but then things have gone past, and many events have happened in Pakistan. We've been planning to have this discussion for over 10 days now. So आज मौका मिला ये बातचीत करने के लिए, और ये अहम मौका है क्योंकि आज कल में इनका सत्ता खत्म हो गया, एंड देयर इज अ इंटरिम गवर्नमेंट व्हिच इज गोइंग टू कम इन प्लेस। और जो इंटरिम गवर्नमेंट आने वाला उसका आकार पता नहीं है, कौन इसका हेड होगा ये भी नहीं पता, ये आगे कितना दिन चलेगा ये भी नहीं पता, एंड देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड अनसर्टेनिटी ओवर पाकिस्तान। और ये खुद पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं, मैं दो शब्द उनके बारे में दिखाना चाहता हूँ जो आज के डॉन में एडिटोरियल्स में आए हैं। ये बोलते हैं कि वी मे बी मूविंग टुवर्ड्स परमानेंट हाइब्रिड रूल with the civilians playing second fiddle. There are already signs of security establishments creeping domination, with the security leadership's increasing role in several civilian fields, including running the economy. The ruling coalition has virtually abdicated civilian authority. तो एक और दूसरे व्यक्ति ये लिखते हैं, the composition of the caretaker government that will rule Pakistan in the interim has also been a tightly guarded secret. यही मैंने बताया था कि इसका आकार क्या है ये नहीं पता, कौन आ रहा है ये नहीं पता। आज शाम को किसी ने लिखा है कोई जिलानी है जो पुराना हाई कमिश्नर था इंडिया में, वो बिल्कुल कट्टर एंटी इंडिया हार्डलाइनर, उसको लेके आ रहे हैं, देखेंगे कौन आएगा। Arguably, the bigger question is whether any of this matters. An American witticism from decades ago, long before they were memes, went something like, it doesn't matter who you vote for the government always gets in. But in this case, it doesn't matter whom you vote for, the Pakistani army always gets in. It, Yes. in fact, has never gone out. Okay. The point is whenever it is held, and regardless of who is permitted to participate, and for that matter, favored over others, how exactly will be the future any different from the abysmal present? एक अहम सवाल है, और खास करके ये सवाल में ये प्रॉब्लम है कि इनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नया आसिम मुनीर है, आई एम जस्ट सेटिंग द स्टेज सो दैट ब्रिगेडियर अरुण सहगल कैन गिव हिज आइडियाज। द खास करके इनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है, ये अलग अलग जगह अलग अलग बोल रहा है। जब when he is with the tribal people he talks of terrorism, when he is with the armed forces he talks of economy, when he talks with others he talks of India. आजकल इनका नाम जो निकल आ रहा है ये है डिसीवर, ही इज नोन एज द डिसीवर, राइट। ये मेरे को 2 दिन पहले पता चला। ये बोल रहा है हर जगह कि पाकिस्तान इज रिच इन मिनरल्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विल कम आउट जब ये खान भरेंगे, ये खान निकलेंगे। ये क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो सैंडक माइंस हैं जो बलूचिस्तान में, उनका पूरा पैसा जो है चाइना ले जाता है। इसके बातों से ये पता चलता है ही डजंट वांट इलेक्शंस, right? He is not keen on democracy and he hates politicians. He has shown a tendency to recite Quranic verses at every opportunity, something like the Zia time. Between terrorism and the India threat, he feels India threat is the bigger threat. ये भी खट्टर एंटी इंडिया ये है। और द वरिंग ट्रेंड जो मैंने 2-4 जगह मैंने पढ़ा है कि वो है कि हर जगह, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कुछ बचा तो है ही नहीं, ये सब बोलते हैं कि हम तो आठवीं शक्ति हैं,
or I want to use my nuclear power. If anyone dares to look at me, the nuclear card comes out. And they also spoke of zero range nuclear capacity, etc., etc. All this is indicative of what we showed in this opening slide. Peronia. Empty bones and riding big and talking dangerously. So this is what I thought is the current flavor and the thing coming from Pakistan. We'd like to hear your views. All yours, sir. Thank you very much. I think you have given an excellent overview and excellent start point to our discussion. Uh, Fundamentally, I will be talking about two things. Basically, uh, what is the contemporary situation? What is the how is the army viewing it? Both in terms of it's trying to take over a hybrid control of the governance, and secondly, about his paranoia about the military challenge or a military threat that it perceives. So, first and foremost, we have to recognize the fact is that Pakistan is going downhill at a very, very fast pace. There is political infighting. There is no political element within Pakistan which has the capacity to govern on its own. Result is that there are a huge amount of political disruption in the country, and that is one of the causes of concern of the army. And the army feels that this political infighting, which is impacting the economy, which is impacting the internal security, which is impacting the terrorism, which is impacting foreign investments, is a great source of vulnerability. The contemporary situation is this, that despite injection of $3.6 billion IMF loan recently, and China regularly restructuring the debt, and Saudi Arabia providing its support, the Pakistani economy remains in shambles. A very senior economist recently said in a uh, YouTube broadcast, he says, as far as Pakistan is concerned, it has lost both economy and security. The Pakistan's economy and security has been lost forever. These two elements no longer exist. Pakistan today has a 720 billion dollar debt which it has to provide. Its entire economy is based on taking more loans to pay back old loans. And in the whole structure, what this man, an old Pakistani economist, was trying to lament was that he says the gap between the rich and poor is increasing. Even in the latest budget, the poor are being taxed, the salaried class is being taxed, the captains of the industry, the great uh, farmers, they are not being taxed at all. So as far as he's concerned, there is a Pakistan which is so rich that it couldn't care less of what is happening to the country. They have their tentacles all over the globe, and there is a Pakistan which is suffering, weak, etc., which is finding it hard to, to make two ends meet. Now, the 9th May, what happened on 9th May was a characterization of this element where a poor state saw in Imran Khan a ray of hope, and they joined the struggle and did what they did on the 9th of May. But typical of the political class in Pakistan ran away, his supporters ran away, joined with the government, sided with the government to prevent their own backsides, to say, to prevent their own interests, and leaving the poor people in the ditch.
in the lunch, sorry. The result has been that despite large scale uh, feeling of dissatisfaction amongst the masses, and they are building hatred against them, the state, particularly the army, in multiple forms, has hit back, brought in cases under the Army Act, taken people to prisons, tortured them, and the result today is that the state is worried, people are worried, and they have nowhere else to go. So there is a big saying which is going around. It says the Pakistani army has never won a war. All that the Pakistani army is capable of doing is zulm against its own people. It is doing zulm against its own people. It is very good, very efficient in persecuting its own population and fail every time they face a foreign challenge. Now, this is the backdrop that we are talking about. This is so the elements and the developments within Pakistan is making the GHQ very nervous. On top of that, as very rightly said by General Shankar, there is an overbearing chief of the army staff who thinks that he can bring about the change required in Pakistan. His belief is that that change can only be brought about by direct intervention of the military, particularly in the economic sphere. So, what are the new trend lines which we are seeing now? The first trend line तो is एक that एक 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 मिनट इससे पहले कि आप ट्रेंड लाइन बता सकते हैं, मैं दो जो आई जस्ट संक्षिप्त रूप में हिंदी में सबको बता देता हूं। जो okay, ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब ने बताया कि ये पाकिस्तान आजकल जी रहा है, जो आईएमएफ का लोन मिला है, चाइना से जो लोन रोल ओवर हुआ है, सऊदी अरेबिया और यूएई से के साथ ये इकोनॉमी चलाना चाहते हैं, पर ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जो देयर इज अ सर्कुलर डेट व्हिच इज गोइंग, और ये सर्कुलर डेट में ये कर्ज में डूबते जा रहे हैं। देयर एसेट्स आर बीइंग सोल्ड, जितने भी इनके लैंड हुआ, पोर्ट्स हुए, ये सब बेच रहे हैं ये। एक कैसर बंगाली है, उसने बोला तो पाकिस्तान तो बिक रहा है पूरा, राइट। that's a good. और लोगों ने जो देखा कि इमरान खान एक ही वाज अ रे ऑफ होप, कि आशा की किरण था, उसको तो अंदर कर दिया इन्होंने, और उसको पूरा उसका पार्टी को नष्ट कर दिया। पर बात यह है कि उसका पार्टी पूरा तरह नष्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि ये जेल में जाने के बाद और पॉपुलर हो जाए, क्योंकि अभी तो ये मार्टियर बन गया, ये देखने वाली बात है। और लोगों को ये महसूस हो रहा कि कहीं जाने के कोई जगह नहीं बचा है, और ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जिसने एक जंग भी नहीं जीता, वो अपने लोगों के ऊपर ही जुल्म कर रहा है, राइट। ये है जो अरुण सहगल साहब ने बताया। सर आगे प्लीज सर, ऑल योर्स, सॉरी Okay, फॉर there are आप we कभी are कभी seeing थोड़ा two. हिंदी में बात कर लीजिए। ओके, हम दो ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस समय प्रचलित हैं। सबसे पहली है इकोनॉमिक ट्रेंड लाइन। इकोनॉमिक ट्रेंड लाइन के अंदर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, वो उनका मानना है कि पाकिस्तान के जो है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमें ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर, लोगों का मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है, बाहर वाला जो इन्वेस्ट करने वाला है, उस अंदर एक तरह का विश्वास बन जाए कि पाकिस्तान के इज अ स्टेट इन विच आई कैन इन्वेस्ट, वो इन्वेस्टेबल स्टेट है। तो मैंने बोला एक है वो 4.5 बिलियन डॉलर का एक प्लांट लेके आ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो चाइना लगाने वाला है। इसका नाम इट इज अ मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर विच इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर वो लेके आ रहा है। अभी ये प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये चश्मा मियाँ वाली के पास जो है, जहाँ पे उस ऑलरेडी उसके पास उसके जो
रिएक्टर लगे हुए हैं, प्लूटोनियम रिएक्टर्स 4 उधर उसी इलाके में वो लगाएगा। दूसरी वो है, उसने आफ्टर सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद, एश्योरेंस देने के बाद एक नई डील बनाई है जिसके अंदर $10 बिलियन की रिफाइनरी लगाई जाएगी कराची के बाहर। उसके अंदर सऊदी अरेबिया सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर अंडर राइट कर रहा है। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडर राइटिंग बाय सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान समझता है कि मैं ग्लोबल लोन ले लूंगा, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशनल लोन ले लूंगा और अपने देश के अंदर से हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो दूसरी बात है। तीसरी बात, जैसे कि जनरल साहब अभी बोल रहे थे, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली आर्मी ने रियलाइज किया है कि हमारे बस में नहीं है हम एयरपोर्ट्स और जो है अपनी पोर्ट्स को अपने आप चलाएं। अगर आपको याद होगा कि शुरू में जब ग्वादार के पहला टर्मिनल बना था, तो उस समय एक सिंगापुर कंपनी होती थी जो उसको चलाती थी। उसका उन्होंने, जब चीनियों ने देखा कि ग्वादार एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट बन सकती है, हमारे को बड़ा फायदा हो सकता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उन्होंने ये आई थिंक 30 ईयर के लिए ये ग्वादार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीनियों को दे दिया। उसी तरह जो है अभी वो क्या कह रहे हैं कि कराची, लाहौर और एक और एयरपोर्ट है जिसको वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और प्राइवेटाइज का मतलब क्या है, दे वांट टू कॉल ग्लोबल टेंडर्स फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स टू रन दीज एयरपोर्ट्स अंडर प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इससे तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान कोई भी बैंक ओन नहीं करता एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान स्टेट बैंक, जो ऑब्वियसली इस कंट्री का बैंक है। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई नेशनल बैंक नहीं है। सारे के सारे बैंक जो हैं वो फॉरेन ओन्ड बैंक्स हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि साथ ही साथ जैसे ही इकोनॉमी डिटेरियोरेट हो रही है, तो ये जब ये जो है फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे टोयोटा हुआ, सुजुकी हुआ और जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी हुआ, वो सब जो है वो पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और या स्केलिंग डाउन कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन को बदलाव में लाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 3 सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करी है। वो है माइनिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और जो है डिफेंस डेवलपमेंट सेक्टर और डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर। और इसके ये है, उसके लिए उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है जिसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो वो समझते हैं कि इसके साथ मिलके वो इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी मिलिट्री ने अभी क्या करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने बोथ सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अब अंदर घुसना शुरू कर दिया है। अभी इस चीज का दारोमदार जो है वो इस तरह किया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी इलेक्शन मोड में जाने वाला है। जैसे जनरल साहब ने कहा, अभी वो क्या कर रहे हैं कि कल या उन्होंने अनाउंस कर देना है कि इलेक्शन होनी है, और इलेक्शन होने के लिए बिकॉज उसकी अनाउंसमेंट डेट से पहले हो रही है, तो अगर डेट पे होती तो 2 महीने मिलते थे, अभी होने हैं 3 महीने। परंतु एक और जुगाड़ उन्होंने डाल दिया है। वो जुगाड़ ये है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसने डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करी थी और कहा था कि काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिटेशन करना है, और ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है उसके लिए हमें 5 से 6 महीने लगेंगे। तो ये सारा माहौल जो बनाया जा रहा है इलेक्शंस को डिले करने का, ताकि इलेक्शंस इस साल के एंड में होने की, अक्टूबर में होने की बजाय वो अगले साल 2024 में 20 और 24 में पोस्टपोन हो जाए, और आर्मी को ये 8-9 महीने मिल जाए टू पुट इट्स हाइब्रिड मॉडल, जो भी जनरल साहब ने बोला, इस हाइब्रिड मॉडल
of governance in place. So this is what the economic policy of the Pakistani military is. Now, the question that comes about is how effective can it be, particularly in the backdrop of the caretaker government and its limited ability to take decisions. अभी केयरटेकर गवर्नमेंट तो नॉर्मल सरकार की तरह नहीं चल सकती. सो ये चीज को देखने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि किस तरह से आर्मी अपना कंट्रोल बनाएगी. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी नजर जो है, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है असीम मुनीर साहब है, उसके ऊपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो हालांकि वो बड़ा एक रिलीजियस आदमी है. He thinks he's a very clever man, but you know, all clever people who think they are too clever by half end up making stupid mistakes and taking the country further downhill. और ये सबसे बड़ी समस्या हम फेस कर रहे हैं. Before I come to the security part. Sir, can we have a little discussion on the economies? Yeah, sure. Yeah. So, whatever Brigadier Arun Sehgal has said, I mean, I go with it. उसमें कोई दो राय नहीं. 2-3 things I want to clarify and 2-3 things I want to highlight. पहले इन्होंने बोला था कि molten salt reactor बनाने वाले हैं. Molten salt reactor, let me highlight. This molten salt reactors are thorium based reactors. Thorium reactors. और थोरियम रिएक्टर का टेक्नोलॉजी जो है इनके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके बीचेस में कुछ थोरियम है, इसीलिए वो थोरियम की ओर जा रहे हैं. और थोरियम के करने के लिए इनको पूरा चाइना का मदद मिलेगा. इसका मतलब जब चाइना का मदद मिलेगा तो चाइना का पकड़ इनका न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर 100% हो जाएगा अगर ये आ गया. तो ये एक चीज है जो हमें देखने वाली बात है. दूसरी बात इन्होंने बताया, जो द थोरियम साइकिल needs lot of plutonium. So lot of plutonium. Unless you have a certain amount of plutonium, the molten salt reactor doesn't take off. I'm talking technology. So then leads us to the next question. In fact, even China is trying to get into this molten salt reactor technique and getting into thorium cycle, because thorium is a safer cycle from a energy point of view. Why I'm saying this is, I mean, this is for all. So I'm diverting, but it's worth it. Because India is the leading, country in thorium cycle. Thorium reserves. And thorium reserves. Not only reserves. We have almost about 80% of the world's thorium reserves on the beaches of Kerala. In fact, in thorium research, we are the leading. In fact, more than 50 to 60% of the papers which are written on thorium technology come from India. And what's more, we already have a test reactor going. It's in Kalpakam. Yeah, it's already on. It is not new. It's a 30 megawatt thorium molten salt reactor, which is operational, the technology is ready. Only problem is, to kickstart the thorium cycle, you need plutonium. Why I'm talking this is because ये इन्होंने बोल दिया कि हम ये तो बोल रहे हैं कि molten salt reactor लगाएंगे. चाइना भी बोल रहा है कि हम molten salt reactor लगाएंगे. दोनों देश ये भी बोल रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाएंगे. दोनों चीज नहीं हो सकता. या ये होगा या वो होगा. तो ये this has got tremendous implications and we have to see it a little closely. Yes, sir. Please. I just want to add one small point. आपने जो कहा 100% correct. The molten sodium reactor is the first reactor जो है वो चीन बना रहा है. और देखिए वो अपने देश में नहीं बना रहा है, वो बना रहा है पाकिस्तान में. और दूसरी बात ये है कि ये चश्मशाही जो है, और जहाँ पे मियाँवाली के पास जो बना रहा है, वहाँ पे 5 जो है प्लूटोनियम प्लांट्स हैं. आप पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत हाईली इनरिच यूरेनियम एंड जो है प्लूटोनियम टेक्नोलॉजीज हैं बॉम्ब बनाने की. सो जो प्लूटोनियम चाहिए होगा उनको, वो यहाँ से लेके आएंगे. और यही कारण है उन्होंने जगह वो चुनी है.
अभी कितना वो बना सकते हैं, कितना नहीं वो देखने बनाएंगे, वाली बात है, वो देखने वाली बात है। आई जस्ट वो थॉट आई देखने वाली क्लैरिफाई। बात। नो नो सर, ये आपने बिल्कुल बोला, सही बोला। मैं जो इन्होंने बोला बिल्कुल 100% है। खास बात यह है कि वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस एंटायर डेवलपमेंट बिकॉज न्यू Yeah, डेवलपमेंट absolutely. इंक्लूडिंग चाइना एंड Pakistan, and this is in the open. It is coming as a civilian nuclear, deal. So we have to keep track of this. This is a new angle which has opened up. जहां तक ये जी, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सर, एनीथिंग? नो प्लीज, नो नो कैरी। हाँ, जहां तक ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, माइनिंग बेच रहे हैं, ये सब तो ये बिक रहा है, ये सिर्फ बिक्री है इनकी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हो और वो आप सोच रहे हो कि निवेश और कोई करेगा, तो ये तो बेवकूफी है, कोई नहीं करेगा। राइट। एक और बात है कि अगर ये मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर आ भी जाएगा और थोरियम रिएक्टर आ भी जाएगा, बिजली उत्पन्न करेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं करता वो। अगर बिजली उत्पन्न करेगा तो पाकिस्तान उस बिजली के साथ क्या करेगा? ऑलरेडी इनके पास जो बिजली है इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। वो शादी का मंडप चलाते हैं, ये वेडिंग हॉल, ये वेडिंग पार्टीज चलाते हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनका एक मिफ्ता इस्माइल है जो पुराना फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसका बोलबाला है कि भाई अगर हमारे पास बिजली है भी तो हम सिर्फ शादी के और बारातों का हॉल जला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री तो है ही नहीं। इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे हमें नहीं पता। ओके, मोटा मोटा तौर पर दे आर मिलिटराइजिंग देयर इकोनॉमी, दे आर कंप्लीटली मिलिटराइजिंग देयर इकोनॉमी, जो जो पहले जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ के टाइम में भी नहीं था। ये बात देखने वाली बात है। और ये SIFC जो सर ने बताया है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द CPEC। आज ये डॉन में इसके बारे में एक आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल आया है, और इसमें सवाल ये उठता है कि जब CPEC was not a success, खास करके when there was a proper government in place and all structures in place, CPEC was not a success. How will SIFC be a success when the whole thing is a hybrid rule with no structures, with no governance? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरा हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ, और मेरा थिंग इज दैट द हालत इनका और बिगड़ता जाएगा। और किस तरीके से बिगड़ेगा, और ये जो पहले ब्रिगेडियर साहब ने बताया, ये दो पाकिस्तान है, एक अमीर पाकिस्तान और एक गरीब पाकिस्तान। चोट ये गरीब पाकिस्तान के ऊपर आएगा, और देखने वाली बात है ये गरीब पाकिस्तान और गरीब कहाँ होगा, और ये जुल्म जो हो रहा है उनके ऊपर और कितना होगा। So this is what I had to say. If you have this thing, you can take it forward, sir. Okay. So essentially speaking, the most critical point which has been highlighted so far is the militarization of the economy. Now, the problem with the militarization of the economy is that the ability of the military structures to manage the depths of the economy, the manner in which it has to be played up, etc., is something which they are not fully aware. They will pick up their own people, and whether those people वो उन लोगों के पास इतनी क्षमता है इसको ले जाने के लिए. And then the second part is, as things do not go as per plan, they will be increasing popular resistance against the military. So that is another element, that popular resistance जो है मिलिट्री की जो सिक्योरिटी साइड में है वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर मिलिट्री की जब वो इकोनॉमिक साइड में बंगलिंग होगी तो वो जो है वो पॉलिटिशियन से लोग जो है वो मिलिट्री को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्बैलेंस इन पाकिस्तानी स्टेट. Okay. I think that's Now a I very come. important point you made, sir. ये बहुत important point बनाया कि imbalance is staring at us 5-6 months down the line. Yeah. Okay. Now I come to the second issue of security dilemma. Now the Pakistan's problem right now is like this. उन्होंने सोचा अफगान वॉर खत्म हो गई, तालिबान सरकार वहां में बना दी, तो अभी तो हमारी बल्ले बल्ले है, एंड वी आर नाउ सिटिंग प्रिटी, वी कैन मैनेज ऑल द एलिमेंट्स एटलीस्ट एज फार एज द टेररिज्म कंसर्न, एंड द इस्लामिस्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड. वो हुआ नहीं, उसका उल्टा हुआ है. Situation today is TTP has emerged as a painful
organization which is eating into the vitals of the Pakistani state, launching attacks, killing military people, attacking masjids, attacking schools. In short, it is now becoming an absolute millstone around the Pakistan's neck. That is why Mr. Asim Munir Durrani. had to now he had to say that, look, I have to undertake operations against them, and we are on a threshold where the Pakistan is going to launch major counter-terrorism operation or counter-infiltration operations, both against the TTP as also they will not hesitate to go into Afghanistan. This is going to further reshape the atmosphere over here. And please note the two areas where the TTP and the Baluchistan Liberation Army are strong are the two border states on Western Pakistan, and both states are central to the stability of Pakistan. ये जो है ये सिनेरियो जो है ये हम देखेंगे कि ये सिनेरियो लिंक करिए इस सिनेरियो को इमरान को अरेस्ट को और लिंक करिए कि दी बेस जो है इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा है तो आप एक बड़ी सी पिक्चर बन के देखती है वेयर इज द टेररिज्म ऑफ द टीटीपी will get further inflamed because of these political factors. And on the other hand, in the Baluchistan Liberation Army, there are already elements who are against it, and all attempts to, we have seen the attack in Quetta on the Chinese ambassador. We have seen how regularly Gwadar is being attacked. We are seeing how the people of that region, Gwadar, are campaigning against ill treatment being given to them and all land being given to Punjabis, etc. So there is this whole situation of internal scenario is going out of control. The second element is this: the Pakistani state has suddenly, particularly Pakistani military, suddenly realized it is low on space, low on oil. It does not have the capacity, and its conventional capacity to deal with any conflict with India is severely compromised. और आज की तारीख के अंदर पाकिस्तानी एक आपने याद होगा कि जनरल बाजवा साहब रिटायर होने से पहले उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी स्टेट में ऐसी दशा में नहीं है कि वो भारत के साथ हॉस्टिलिटीज कर सके। तो उसका जवाब के लिए उसके ये चीज को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तानी सीनियर लीडरशिप है वो जानती है कि ये एक बड़ी सारी सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी हो गई है पाकिस्तानी स्टेट के लिए, और अभी उस स्टेट को उस वल्नरेबिलिटी को वो कैसे एड्रेस करते हैं। इस एड्रेस करने के लिए 25वीं सालगिरह जो है उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रोग्राम की, किदवई साहब ने एक बड़ा भाषण दिया। उन्होंने 2-3 चीजें अहम तौर पर बोली। उन्होंने बोला एक कि जो है हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी है, उसके 2 रुख हैं। एक हमारे पास वेक्टर्स हैं जो लॉन्ग रेंज से 0 से 2750 किलोमीटर, जो कि उनकी जो लॉन्गेस्ट मिसाइल सिस्टम है शहीन है वो उसको कवर करते हैं। और दूसरा उसने बोला कि मेरे पास जो है तीनों सर्विसेज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और तीनों सर्विसेज के बाद न्यूक्लियर वेपन्स होने का दारोमदार ये है। आर्मी के पास शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, 0 का मतलब है कि अभी वो म्यूनिशंस, एटॉमिक म्यूनिशंस या उससे भी शॉर्ट रेंज वेपन्स को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरफोर्स के पास एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स, और दूसरा उन्होंने बाबूर जो है उसको एक एज एटॉमिक क्रूज मिसाइल की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो जो है ट्यूब लॉन्च सिस्टम्स, जुआन क्लास और जो है अगस्टा क्लास में वो मॉडिफिकेशन करके वो उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से हमें बताना चाहते हैं कि आप ये मत समझिए कि हमारी कैपेसिटी कम है और मेरे पास तीनों डायमेंशन में वेपन सिस्टम है। आइडिया क्या है उनका?
आइडिया है कि वो कहते हैं कि मेरे पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है कि भी आप जो मर्जी करोगे, मैं आपके पास डील करने को तैयार हूं। मोटी तौर पे एम इज वेरी सिंपल। I will use my nuclear capability to ensure security of the Pakistani state. I am willing to use nuclear weapons at tactical level, at operational level, and at the strategic level in a concept called first strike followed by second strike. मतलब जब मैं टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता हूँ, शॉर्ट रेंज वेपन जहां करता हूँ, आप जवाब दोगे, उसके बाद आपको उस जवाब देने के लिए मेरे पास लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम है। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। सो सेकंड थिंग वो कह रहा है कि जैसे बालाकोट हुआ, वी हैड बालाकोट एंड वी रिटेलिएटेड। ही सेज देयर इज नो स्पेस फॉर conventional operations under nuclear overhang. पाकिस्तान इस थ्योरी को नहीं मानता। अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में पहुंचता है कि कन्वेंशनल सिनेरियो में is becoming untenable or it is leading to an adverse situation for Pakistan, Pakistan will not hesitate to use nuclear weapons. वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कहते हैं कि मैं इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होंगे, चाहे उससे बड़े वेपन हो, ऑल डिपेंड ऑन हाउ आई परसीव द सिचुएशन. सो इन शॉर्ट, nuclear weapons are becoming a strategic shield for Pakistan against a militarily strong India, which is developing its military capability in multiple domains and is becoming so strong and becoming a serious conventional challenge. And he says that I have no option but to deal with this challenge through my nuclear capability. You want to say anything? हाँ सर, ये आपने जो आई विल हैव अ लिटिल डिस्कशन ऑन दिस. ये आपने इम्पोर्टेंट बात बताया, दो तीन इम्पोर्टेंट बात जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू हाईलाइट इट. You spoken of a multi-dimensional capacity which they have now come out with. Earlier, it was just a one-dimensional way of looking at it. Now there are two new things. It appears that they have some sort of a triad. As nascent it is, they are trying to project it. They don't have a triad. ये triad तो है नहीं. But they're posing as if they have projecting as if they have a triad where they have a undersea capability also. Though these Agustas and the others, you don't know how far they'll be able to go out of into the Bay of Bengal. But they're trying still. When they say full spectrum, capability, they are trying to project probably to their own people that they have parity or an edge over India, which is what their dream is. That's the first part. The new thing is that they're talking of first strike followed by second strike, right? That means ये पूरा दाव पे लगा रहे हैं सब कुछ. अब आप सोचिए सर, कौन दाव पे लगाता है सब कुछ जिसके पास और कोई आशा नहीं है. पर उल्टा बात यह है कि कौन इसको अटैक करना चाहता है. जो आदमी खुद मर रहा है, चाहे उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, उसे हमें क्या लेने देना. And he doesn't have and they're in a paradox. They don't have the capability to come against us. And we are not interested in going on conventional thing with them. They also don't have the capacity at this point of time to undertake hybrid threats across the LOC. They have to focus everything on the Western Front. So I mean, this is my view that all this is to tell their awam that we are under threat. Keep focusing on the India and use the nuclear card to enhance this imagined threat so that they can retain their power. I mean, this is my view. Say your views. We could. No, it's an absolutely very correct and to the point assessment. The bottom line basically is this: a vulnerable state of Pakistan, which is militarily weak,
is attempting to leverage its nuclear capability by providing it a multidimensional perspective to, to tell India that India will face unprecedented wrath should it go try to attack Pakistan. And secondly, more than India, they're trying to convince their own people the core centrality of Pakistani military to the security of the Pakistan, and therefore all actions of the Pakistani army are outside the purview of the people's concern, and Pakistani army knows the best. There is another element which is very dangerous in terms of this brinkmanship and posturing game which they are playing. They believe that even if we use tactical nuclear weapons, and India has that full spectrum response, so not sorry, massive retaliation doctrine, they believe that India will be restrained by global conditions and its own economic potential to will only be a graduated response. India will only undertake what is called a graduated response. In this scenario of graduated response, they believe that that graduated response can then be leveraged by us, by Pakistan, that is, to seek international community's intervention for conflict termination before the whole situation escalates. Now, in this, there is an insidious game being played. The insidious game which is being played is in their mind that if they believe that India will respond in a graduated manner, in a responsible manner, etc., 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 therefore nuclear escalation will not cross the next rung, and therefore I am in a position to continue with my subconventional conflict against India with the price which I can accept and pay, but India will cannot undermine my national security so the point here is the Pakistani state, because it is India-centric threat, is convinced itself that India has any concern in touching with a barge pole a decaying state of Pakistan. The whole ideation of their thinking is basically is this, which it has been questioned by their own people as a very warped People. thinking, and by their own analysts, senior analysts, and all this. It is a very warped thinking, and you are playing a dangerous game of irrationality. So there is another point which I want to make, and this is something totally different from just the one-dimensional Pakistani threat and response thinking. देखिए ये तो इन्होंने जिक्र कर दिया कि you know second strike capable, first strike followed by second, and hyping the nuclear threat and all that. They're posing this threat. साथ साथ आजकल जो मैं क्योंकि चाइना के ऊपर भी काफी वीडियोस कर रहा हूँ, बहुत लोग चाइना से 4-5 लोग उन्होंने कमेंट किया है. इनफैक्ट टुडे when I was, we were discussing in the evening as to how to take this forward, I saw a comment by one guy and he goes by the name Mr. Bean. मैं सबको बताना चाहता हूँ. अब देखिए उसके और मेरा जो exchange चलता है. He suggests to me the way India has to deal with this entire Chinese threat is to increase its, thing on the border, increase infrastructure, do X, Y, Z, everything, and stay vigilant and commit its resources on the border. This is what he suggests to me. And if you look at it in the larger picture, we know that Pakistan is a cat's paw for China. ये शेर का पंजा है उसका, राइट? तो ये हो सकता है क्योंकि इसका चाइना के अलावा और कोई दोस्त ही नहीं रहा, कोई इसको बचाने के चक्कर में नहीं है, और चाइना is extracting this to make Pakistan talk nuclear, and China is posing that threat on the LAC to ensure that India focuses, and this great two front threat
is alive with a expanded nuclear dimension. ये भी तो है. I mean, this is what comes out of this whole story. Because there's no other, I mean, there's a second angle which I'm trying to put across. I would like your views on it, and maybe we could look at it. I agree with you. I mean, see, the bigger point is that we have always believed that Pakistan is a surrogate state of China, particularly even in its nuclear capacity building, nuclear capability building. And if you go through in details, you see where the nuclear stuff is coming into to Pakistan. The important issue is this: is that having failed to pose a conventional threat to India, Pakistan is hyping up with a nuclear threat, while China continues its shenanigans on the line of actual control. Well, So there is this correlation which you very rightly brought out, and I fully underscore those this continuum of duality of threat, particularly and this is where the interesting aspect comes in. The interesting aspect is this: is that China, which intrinsically wants to keep India outside the growing Indian Ocean. influence of United States, is actually by its actions is pushing India towards the direction which India would have no option but to intrinsically develop its own capacities, capabilities, and systems which will tomorrow undermine China. While on China, I just want to highlight one simple fact. Chinese concerns in Tibet are because China does not still control Tibet. India's offensive capacity is not today, tomorrow, but 2035, 2040 will make China vulnerable to India, and tomorrow and operations at that time frame could result in China losing its territory. China has no problems of territorial disputes in terms of which could result in loss of their territory with any other country except India. Except And India. India. Yes, sir. So therefore, the Chinese are very concerned about this whole issue of having let off the genie out of the bottle and forcing India to upgrade in great strength its capacities and capabilities with China. I tell my friends who are saying why India has lost 2,000 kilometer, 100 kilometer territory, I said, hold your horses. India is developing capacities, India is developing capabilities. Like we discussed in one of our earlier programs, status quo is cannot happen for perpetuity. At some stage, it will have to go back to status quo ante. And China would have to negotiate. And China understands that. China is only playing the card that I will negotiate from a position of strength. And unfortunately, India is telling you your capacity to dictate terms to us is getting limited as we go along on a daily basis. I think you hit the nail on the head, sir. आपने जो बताया एक अहम चीज बताया. मैं मोड़ रहा हूँ पाकिस्तान से लेकर चाइना के लिए deliberately this discussion because right and we'll probably end it at this. और मैं सबको बताना चाहता हूँ हमें strategic patience दिखाने की जरूरत है. जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया strategic patience and ये जो strategic patience हम जब इसका क्या आकार होगा और इसका क्या ingredients होंगे. Part of strategic patience, the first part of strategic patience is listen to this noise which is coming with a cool head. Don't react. Don't react by going into Gilgit-Baltistan. Don't react by going into POJK and territory वापस लो, ये लो, वो लो. Don't make this paranoid state of Pakistan unstable. Let them be unstable on their own. That's the first part of strategic patience. The second part of strategic patience is
don't react to pinpricks on the LAC. The third part of the strategic patience is build your own strength. Focus on the Indian Ocean. Focus on the maritime domain, which is where the whole story is. And आज सुबह इसीलिए मैंने, क्योंकि ये बात मेरे को पता था कि यहाँ आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर के बारे में बात करने से ये चाइना के ऊपर शिफ्ट होगा। आज सुबह मैंने एक हमारा वीडियो गनर शॉट का वीडियो विद जनरल विनोद भाटिया, विच इज कॉल्ड 4D स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइना, हमने जारी किया है। वो ऑन है, आप देखिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप उसको देखोगे आपको पता चलेगा हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए चाइना के साथ डील करने के लिए। और ये जो स्ट्रेटेजी अपनाओगे, ये भी इनर पार्ट ऑफ लोअर एज ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। द हायर एज ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, वी हैव टू वेट फॉर चाइना टू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। आज का न्यूज ये है कि इनका एक्सपोर्ट्स जो है -14.5% गिर गए हैं। 14.5% गिर गए हैं। और आज इनका इंपोर्ट्स भी 12% गिर गए हैं। ये जो मैं 4-5 महीने से बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैं 3 साल से बता रहा हूँ। और इनका इकोनॉमी में लिमिट है, ये बहुत बड़ा लिमिट है। और इसके बारे में मैं अगला हफ्ता एक डिटेल्ड चीज चाइना का कंप्लीट इकोनॉमी अप टू 2040 में बताने वाला हूँ। तो यू नीड टू हैव दिस स्ट्रेटेजिक पेशेंस फॉर चाइना टू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और चाइना का एक सर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक, चाइना का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, हम सब सोचते हैं कि हिस्ट्री, चाइना थिंक्स लॉन्ग टर्म, चाइना थिंक्स हैज मैंडेट फ्रॉम हेवन। पर आप उनका हिस्ट्री देखिए, 2-3 चीज, हर 2 साल 200 साल 100 साल से लेकर 200 साल के बीच में इनके सत्ता बदल जाता है। जब ये सत्ता बदल जाता है, एक रेवोल्यूशन के साथ बदलता है। दूसरी बात, ये सत्ता जब बदलता है जब इनके इलाके में फैमिन्स और ड्राउट्स आते हैं। पिछले 3 साल से ये दीज कंडीशंस वहां बरामद है। और इनका इकोनॉमी भी उसका साथ चेंज होता है। जब भी बीजिंग पीकिंग, उन दोनों में पीकिंग में पावर ज्यादा था, तो ये तिब्बत और जिंजियांग इनके अंडर था, इनके फ्लैग के अंडर। जब भी वहां वीकनेस हुआ, इन्होंने अपना ऑटोनॉमी का झंडा खड़ा कर दिया। और यही इन दोनों क्षेत्र का इतिहास है। और ये दोनों क्षेत्र चाइना के 50% का लैंड एरिया बनता है। ठीक है, तो जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं बहुत अहम है कि वी नीड टू बी पेशेंट। ये टाइम ये नहीं है कि जाके तिब्बत में घुस जाओ, पीओजेके में घुस जाओ। शक्ति बढ़ाओ अपना। जब हम अपना शक्ति बढ़ाएंगे, और जो इन्होंने ये भी बताया 2030-35 के बीच में जब हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन से लेकर 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन हो जाएगा, तब इनके लाले पड़ने शुरू होंगे। So, sir, if you have anything to